Let's go. Hey guys, good morning. This is Shank Numunga and you are at my YouTube channel Travelvlog. And today I am going for a short trek which is called as Karnalaforttrek, also known as Karnala Bird Sanctuary. And मुंबई से 1.5 घंटे की ड्राइव है, 2 घंटे का ट्रैक है, टोटल 4 घंटे का ट्रैक आना जाना। और 7 बजे कर्नाला बर्ड सेंचुरी खुलती है, तो मैं जानबूझ के थोड़ा लेट निकला हूँ। अभी बजे हैं 7। लेट्स सी वहाँ पे क्या है। Initially my plan was to go for देवपुर waterfalls, but heavy rainfall के चलते वो बंद कर दिया जाता है हर साल। पिछले साल भी मैं छूट के वापस आ गया था, तो सितंबर तक वो क्लोज है। मलचेज घाट 31 जुलाई तक क्लोज है। वेस्टर्न घाट्स इतना खूबसूरत है और इतना रिस्की हो जाता है एट सेम टाइम रेन में कि सब बंद कर दिया जाता है। आई होप ये कर्नाला फोर्ट जो है ये बंद ना हो, क्योंकि बहुत ईजी ट्रैक है। मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ब्लॉगर्स ने वीडियो बना रखा है। लेट्स सी वहाँ पे क्या मिलता है। वेदर रहे तो एक ट्रैक का मज़ा है, वरना तो आई एम हियर टू टेक रिस्क। लेट्स सी। अच्छा, मुंबई से यहाँ तक की जो ड्राइव है बहुत स्मूथ ड्राइव है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे गड्ढे होंगे और बारिश है, सड़कें खराब होंगी, पर ऐसा नहीं है। अभी तक तो बहुत सही रहा और सिर्फ 3 किलोमीटर्स है यहाँ से पहुँचने वाला हूँ। और मुझे उससे पहले रास्ते में एटलीस्ट 2 to 3 लीटर वाटर विद यू अंदर, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं। Amazing. First thing you will notice when you will enter, these birds singing, light rain. What else you want? Wow, look at you. Beautiful. Hello. Now I need to find way to fort. How? From where? I think this is the only way. Oh man, 141 kind of birds you can spot at Karnala Bird Sanctuary. Wow. So this is how trek is. I'm feeling hungry already. I wanted to have some idli, dosa or poha, something, but I am not into that habit of eating in morning, so I skipped it. But I think I will need it. Let's see.
अभी सिर्फ 5 मिनट की वॉक हुई है मेरी। इन 5 मिनट में मुझे पसीने आ गए हैं, जबकि बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है फिर भी। So this is kind of sitting area, a shed where you can take breathe or you can escape from rain. And I'm taking a water break, that too in just 20 minutes. If you're coming here, carry at least 2-3 bottles and don't forget to carry Odomos. There are a hell lot of mosquitoes. मच्छर ही मच्छर है। Obviously अब जंगल में ट्रैक करेंगे तो कैटरीना कैफ तो मिलेगी नहीं, मच्छर ही मिलेंगे। Shit. If you are coming here, Karnala Bird Sanctuary, then you have to pay 30-35 rupees entry ticket. And if you are coming by car, you have to pay 100 rupees for parking. And if you are coming by train, deboard at Panvel station, take a shared rickshaw or auto. It is almost 10 kilometers from station. This looks like a small waterfall, nala kind of. Last time I did trekking in Kashmir, that was Kashmir Great Lakes, and it's been more than 10 months. I'm missing Kashmir Great Lakes track. वहाँ मच्छर नहीं थे और वेदर बहुत अच्छा था। वेदर यहाँ भी बहुत अच्छा है बट स्टिल ह्यूमिड है, अर्थ से गर्मी निकलती है। In case you want to see Kashmir Great Lakes track, I will post link somewhere above. You can see it's beautiful. Another break. नहीं पता था ऐसे एप्पल है, शायद पढ़ा था मैंने। 1400 मीटर हाइट है तो अभी तो बहुत होगा। Carry some snacks like dry fruits, chocolate, candies, biscuits, whatever, and don't throw the wrapper, keep it with you. It's good for quick energy. I think a group of trekkers is coming. Better I reach first. If you're watching this video, let me know next place which I should explore, next track which I should take, because I go solo, so I plan overnight and then I ask a couple of my friends if anyone wants to join, but then everyone has their own commitments and I end up coming solo always. फाइनली थोड़ी सी हवा महसूस हुई, जैसे जैसे टॉप पे आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है।
नीचे तो it's very humid because of trees all around. Full on सुनसान जंगल. It's too humid even in this season in monsoon. I don't know मई जून के मंथ में अगर कोई आ गया तो उसका क्या हाल होता होगा. Finally, I think that's fort. मौसम थोड़ा खुल गया है, हल्की हल्की सनलाइट है और क्योंकि हम टॉप पे हैं तो अच्छी हवा भी है. That's the fort. Still a hike. That's the fort. Finally.
आपने वीडियो देखी। अगर आना है तो वीकेंड को मत आओ और सुबह सुबह आओ, 11 बजे तक निकल जाओ। ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वही सब जो होता है, ठीक है। और कमेंट में बताओ कहाँ जाना चाहिए और एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैक, ठीक है। चलो, होपफुली ये वीडियो आपके लिए सही थी। थैंक यू, बाय।